श्री स्वामी समर्थ. स्वामी भक्तांनो, स्वामींचे असे चमत्कारिक मंत्र ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटी नक्कीच दाबा. याने तुम्हाला आपले व्हिडिओज सर्वात अगोदर मिळतील. आणि स्वामी भक्तांनो, आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करून कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ असं नक्कीच टाईप करा. फक्त शांत मनाने डोळे बंद करून स्वामींवर पूर्ण विश्वास ठेवा आणि मंत्र संपेपर्यंत ऐका, कारण हा मंत्र तुमच्या अंतर्मनावर कार्य करतो आणि तुमच्या आयुष्यातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करून सकारात्मकतेचा संचार करतो. लक्षात ठेवा, श्री स्वामी समर्थ महाराज हे फक्त इच्छापूर्ती करणारे दैवत नाहीत, तर ते आपल्या भक्तांना संपूर्ण जीवनात मार्गदर्शन करणारे गुरु आहेत. त्यांच्या मंत्रांचा प्रभाव काळ बदलू शकतो, भाग्य उजळवू शकतो आणि तुम्हाला जीवनात यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर घेऊन जाऊ शकतो. म्हणून भक्तांनो, हा मंत्र आजपासूनच ऐकायला सुरुवात करा आणि काही दिवसांतच तुमचे जीवन कसं बदलतं हे स्वतः अनुभवा. या मंत्राचा प्रभाव अनुभवण्यासाठी कोणत्याही शंका मनात ठेवू नका, कारण श्रद्धा आणि समर्पणच यशाचं खगमक आहे. जेव्हा स्वामी समर्थ महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होतील, तेव्हा कोणतीही गोष्ट अशक्य उरणार नाही. तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी अडकलात तिथे मार्ग निर्माण होईल. जिथे काहीही शक्य वाटत नव्हतं तिथे चमत्कार घडेल आणि तुमचं नशीब पूर्णपणे बदलून जाईल. म्हणून हा मंत्र ऐका, श्रद्धा ठेवा आणि श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या कृपेची अनुभूती घ्या. जर तुम्ही हा मंत्र ख्या श्रद्धेने ऐकला तर तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल निश्चित घडतील आणि पैशाशी संबंधित सर्व अडचणी लवकरच नाहीशा होतील. तुमच्याकडे पैसा टिकत नसेल, विनाकारण खर्च होत असेल आणि त्यामुळे तुम्ही चिंतेत असाल, तरी आता काळजी करू नका, कारण अशा अडचणी प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतात. परंतु श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा हा मंत्र या सर्व समस्या मुळापासून दूर करतो. भक्तांनो, मी हात जोडून विनंती करतो की हा मंत्र अर्धवट सोडू नका, कारण त्याने मंत्राचा अपमान होतो आणि महाराज रागावतात. मग त्यांच्या कृपेचा प्रवाह थांबतो आणि घरामध्ये गरिबी वास करू लागते. त्यामुळे मंत्र ऐकताना तो पूर्ण ऐका आणि स्वामींवर श्रद्धा ठेवा. फक्त उरलेल्या वेळेत शांतपणे हा मंत्र मोबाईलवर लावा आणि मग चमत्कारासाठी तयार रहा, कारण काहीच दिवसांत स्वामी महाराज तुमच्यावर प्रसन्न होतील आणि तुमचं घर धन संपत्तीने भरून जाईल. तुमची तिजोरी रिकामी राहणार नाही, बँक बॅलन्स वाढेल, गाडी, घर सगळं मिळेल. फक्त दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी हा मंत्र मोबाईलवर 108 वेळा ऐका आणि घरात किंवा दुकानात वाजवून ठेवा. यामुळे चारही दिशांनी पैसा तुमच्याकडे आकर्षित होईल आणि तुमच्या जीवनात कायमचा आर्थिक स्थैर्य येईल. जर आज तुम्हाला हा व्हिडिओ मिळाला असेल तर समजा तुम्ही खूप भाग्यवान आहात, कारण आज आम्ही तुम्हाला ब्रह्मांडनायक श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा अत्यंत चमत्कारी आणि प्रभावी मंत्र सांगतोय. हा मंत्र ऐकलेल्याला त्यांच्या जीवनातील सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत. 51 किंवा 108 वेळा मंत्र ऐकल्यानंतर भक्तांना त्यांच्या आयुष्यात मोठं यश आणि प्रचंड पैसा मिळालेला आहे. हा मंत्र इतका प्रभावशाली आहे की स्वामी महाराजांच्या कृपेने तुमच्यावर पैशाचा भंडारा होईल आणि तुमचं नशीब कायमचं उजळून जाईल. कितीही मोठं संकट असो, या मंत्राच्या प्रभावाने आणि स्वामींच्या आशीर्वादाने ते संकट क्षणार्धात दूर होतं आणि जीवनात सुख, समाधान आणि संपत्तीचा नवा अध्याय सुरू होतो. या मंत्राचा प्रभाव इतका जबरदस्त आहे की जेव्हा तुम्ही तो संपूर्ण श्रद्धेने ऐकता तेव्हा तुमच्या जीवनात अकल्पनीय चमत्कार घडायला लागतात. पैसा केवळ तुमच्याकडे येत नाही, तर तो टिकूही लागतो आणि तुम्हाला आर्थिक स्थैर्याचा अनुभव येतो, ज्यामुळे तुम्ही पूर्वी अनुभवलेले संकट मागे पडतात आणि नवीन यशाच्या वाटा उघडतात. भक्तांनो, लक्षात ठेवा, श्री स्वामी समर्थ महाराज हे ब्रह्मांडनायक आहेत आणि त्यांचा आशीर्वाद मिळाला की कोणतीही गोष्ट अशक्य राहत नाही. त्यामुळे हा मंत्र तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक कोपऱ्यात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतो आणि तेवढंच नव्हे, तर जे लोक तुमच्यावर द्वेष ठेवतात किंवा नकारात्मकता पसरवतात त्यांचाही प्रभाव तुमच्यावर राहत नाही. म्हणून या मंत्राचा जप केवळ पैशासाठी नाही, तर संपूर्ण जीवनातील समस्या दूर करण्यासाठी करा, कारण स्वामी समर्थ महाराज हे केवळ धन संपत्ती देणारेच नाही,
तर ते भक्ताच्या जीवनात शांती, समाधान आणि आशीर्वादही भरभरून देतात. फक्त तुम्हाला एकच करायचं आहे की हा मंत्र 108 वेळा मोबाईलवर ऐकायचा आहे, तोही अर्धवट न सोडता शेवटपर्यंत ऐकायचा आहे आणि ऐकताना तुमचं मन संपूर्णपणे स्वामींवर केंद्रित असलं पाहिजे. या मंत्राची शास्त्रातही मान्यता आहे की जो कोणी पुरुष किंवा स्त्री हा मंत्र भक्तिभावाने ऐकतो त्याचे भाग्य रात्रीत बदलते. जर तुमचा संसार आर्थिक अडचणींमुळे बुडत असेल तर या मंत्राचा 108 वेळा जप ऐका आणि बघा तुमचं नशीब कसं फळायला लागतं. मग तुम्ही केवळ धनवान नव्हे तर आनंदी आणि समाधानीही व्हाल. चला तर मग वेळ वाया न घालवता लगेच या चमत्कारिक मंत्राची सुरुवात करूया. हा मंत्र ऐकण्यामागे कुठलाही धार्मिक बंधन नाही, फक्त तुमच्या मनात श्रद्धा आणि भक्ती असली पाहिजे, कारण जिथे भक्ती आहे तिथेच देवाचा वास असतो. भक्तांनो, लक्षात ठेवा, हा मंत्र केवळ शब्दांचा समूह नाही, तर तो एक जिवंत ऊर्जा आहे जी तुमच्या जीवनात मोठा आर्थिक बदल घडवू शकते. म्हणूनच हा मंत्र ऐकताना संपूर्ण लक्ष त्यावर केंद्रित ठेवा आणि अर्धवट कधीही सोडू नका, कारण असे केल्यास या शक्तिशाली ऊर्जेचा फायदा होणार नाही. अनेक भक्तांनी या मंत्राच्या प्रभावाने चमत्कार अनुभवले आहेत. काही दिवसांमध्येच त्यांच्या घरात धनसंपत्तीचा ओघ वाढला आहे आणि अडलेली कामं पूर्ण झाली आहे. तुम्हीही फक्त हा मंत्र तुमच्या घरात, दुकानात किंवा ऑफिसमध्ये मोबाईलवर लावून ठेवा आणि 108 वेळा पूर्ण ऐका. मंत्र ऐकत असताना मनात सकारात्मक विचार ठेवा आणि स्वामी महाराजांच्या चरणी प्रार्थना करा की त्यांचा आशीर्वाद सदैव तुमच्यावर राहो. गरिबी, कर्ज, अडचणी, तोट्याचा व्यवसाय हे सर्व या मंत्राच्या प्रभावाने लवकर दूर होतील आणि त्याची जागा भरपूर संपत्ती घेईल. घरात सुखशांती नांदेल आणि पैशाची चणचण कायमची दूर होईल. फक्त या मंत्राचा जप नियमित करा आणि स्वामी महाराजांच्या कृपेची वाट पहा, कारण योग्य वेळी त्यांचा आशीर्वाद तुम्हाला भरभराटीच्या मार्गावर घेऊन जाईल. आजपासूनच या मंत्राचा भक्तिभावाने श्रवण सुरू करा आणि तुमच्या आयुष्यातील आर्थिक अडचणी दूर करत समृद्धीकडे वाटचाल करा. श्री स्वामी समर्थ. भक्तांनो, तुमच्या जीवनात अपार संपत्ती यावी असं तुम्हाला वाटतं का? जर हो, तर तुमच्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे. हा मंत्र ऐकून तुम्हाला धनलाभ होऊ शकतो. दिवसातून फक्त 2 वेळा 5 मिनिट मोबाईलवर हा मंत्र ऐका. स्वामी महाराजांची कृपा तुमच्यावर नक्कीच होईल. भक्तांनो, आजचा दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत शुभ आहे. या संधीकडे दुर्लक्ष करू नका. हा मंत्र ऐकल्यावर तुमच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल. घरातील गरिबी दूर होईल आणि धनवर्षाव होईल. फक्त विश्वास ठेवा आणि समर्पणाने हा मंत्र ऐका. 108 वेळा मनोभावे ऐकल्यास तुमचं नशीब नक्कीच उजळेल. श्री स्वामी समर्थ महाराज हे दयाळू आहे. त्यांची कृपा जिथे पडते तिथं अंधार दूर होतो आणि उज्ज्वल भविष्य उगम पावतो. भक्तांनो, जर तुम्ही अडचणीत असाल, आर्थिक संकटांनी त्रस्त असाल, तर हा मंत्र ऐकणं हे तुमच्यासाठी वरदान ठरेल. या मंत्रामध्ये दैवी शक्ती आहे, जी तुम्हाला स्वामी महाराजांच्या कृपाशी जोडते. हा मंत्र तुमच्या घरात लावल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल आणि तुम्हाला लाभ होईल समृद्धीचा, ऐश्वर्याचा आणि आरोग्याचा. आजपासून हा मंत्र दिवसातून 2 वेळा ऐका आणि अनुभव घ्या स्वामींच्या चमत्कारांचा. धन, समाधान आणि यश हे तुमच्या दारात उभं राहील. हे फक्त शब्द नाहीत, ही शक्ती आहे, श्रद्धा आणि भक्तीने भरलेली. म्हणून भक्तांनो, आजपासूनच सुरुवात करा आणि स्वतः पहा बदललेल्या नशिबाचे चित्र. फक्त 5 मिनिट. होय भक्तांनो, फक्त 5 मिनिट दिलीत तर हा मंत्र तुमचं आयुष्य बदलू शकतो. तुम्ही स्वप्नातही विचार केला नसेल इतकी समृद्धी तुमच्या पायाशी येईल. हा मंत्र केवळ ऐकण्याची गोष्ट नाही, तर अनुभवण्याची शक्ती आहे. तुम्ही दररोज सकाळी आणि रात्री हा मंत्र ऐका. विश्वास ठेवा, काही दिवसांतच आर्थिक अडचणी मावळतील. स्वामी समर्थांची कृपा जेव्हा होते, तेव्हा कोणतेही अशक्य कार्य शक्य होते. हे वाक्य तुम्ही केवळ ऐकू नका, तर मनावर बिंबवा. प्रत्येक जप हा तुमच्या जीवनात एक नवा दरवाजा उघडतो. हा मंत्र गुप्त ऊर्जा उलगडतो जी तुम्हाला पैशाच्या स्रोताकडे घेऊन जाते. आजपासून रोज हे 5 मिनिट द्या. स्वामी समर्थांचा आवाज आपल्या कानात रुजवा. यश, पैसा, आरोग्य आणि समाधान हे तुमच्या वाट्याला येणारच आहे.
अजिबात शंका नको, कारण शंका तुमच्या समृद्धीच्या मार्गात अडथळा ठरू शकते. स्वामी महाराज म्हणतात, मी आहे, काळजी करू नकोस. मग आपण का घाबरायचं? चला तर मग भक्तांनो, आता याच क्षणी त्या दैवी मंत्राचा जप सुरू करा. मोबाईल बाजूला ठेवा, मंत्र सुरू करा आणि श्रद्धेने ऐका. काही दिवसात तुम्ही पाहाल की तुमचे जीवन बदलतंय, तुमच्या खात्यात धन येतंय आणि तुमच्या चेहऱ्यावर आनंद खुलतोय. प्रिय स्वामी भक्तांनो, तुम्ही खरोखर तुमचं नशीब उजवायला तयार आहात का? श्रीमंतीचं स्वप्न साकार करायचं आहे का? मग हा क्षण तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. या मंत्राकडे दुर्लक्ष केलं तर संधी तुमच्याच हातून निघून जाईल. हा मंत्र ऐकण्यामागे कोणताही दिखावा नाही, ही शुद्ध श्रद्धेची गोष्ट आहे. तुम्ही फक्त 108 वेळा हा मंत्र ऐका आणि अनुभव घ्या काय परिवर्तन घडतंय तुमच्या जीवनात. त्या मंत्रात अशी दैवी ऊर्जा आहे की तुमच्या चिंता, अडचणी आणि नैराश्य याच क्षणी दूर होऊ शकतात. हा मंत्र म्हणजे पैशाचा झरा आहे, जो एकदा सुरू झाला की थांबत नाही. विश्वासाने ऐकल्यास रिकामी तिजोरी भरते आणि गरिबी कायमची निघून जाते. श्रीमंतीसाठी कोणत्याही चमत्काराची गरज नाही, कारण हा मंत्र स्वतःच एक चमत्कार आहे. जिथे स्वामी समर्थांची कृपा असते तिथे अपयश टिकू शकत नाही. जेव्हा तुम्ही या मंत्राचा आवाज ऐकता तेव्हा तो आवाज फक्त कानात जात नाही, तर आत्म्यात पोचतो. प्रत्येक जप तुम्हाला श्रीमंतीच्या मार्गावर पुढे घेऊन जातो. जर आज तुम्ही हा मंत्र मनापासून ऐकलात तर उद्या तुम्हाला पैशासाठी कधीही चिंता करावी लागणार नाही. तुमच्या जीवनात अशा संधी वारंवार येत नाही. आणि चला तर मग आता आपण आपल्या मंत्राला सुरुवात करूया आणि हा चमत्कारिक मंत्र मन लावून ऐकूया. ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः. 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 ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः.
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। 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 ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः।
ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। ओम श्री धनप्रदाय स्वामी समर्थाय नमः। स्वामी भक्तांनो, हा संपूर्ण मंत्र जर तुम्हाला मनापासून आवडला असेल तर नक्कीच आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ पुढे शेअर नक्कीच करा। चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन आणि चमत्कारिक मंत्राच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। धन्यवाद।